हेलो पिला माने आज क्लास रे आमे देखिबा क्लास 12 रो को इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करिक जिबार अछि काउंसिल एग्जाम पई गोटे गोटे करी देखो। तो फर्स्ट चैप्टर को आमे जिबा को चैप्टर सेटा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि देखि दवा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे सबुठी इंपोर्टेंट हैला कोन ना गॉस लॉ। तो गॉस लॉ रे जो तीनटी एप्लीकेशन अछि से तीनटी एप्लीकेशन को आमे छाडी के जिबा नै। तो फर्स्ट कोन ना state Gauss law using it to find electric field intensity due to a line charge এটা হলো ফার্স্ট কোশ্চেন। হলো সেকেন্ড কোশ্চেন সেম স্টেট Gauss law and using it to find electric field due to a plane sheet। है थर्ड है using Gauss law find electric field due to a spherical charge distribution बुझे ना तीनटा गला। 4 नंबर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole at any position and fifth रहला end on position बा जहा को हमें कहूजे कौन एक्सियल पोजिशन बा जहा को आउ कौन कहा जाए tan a पोजिशन ऑफ द डाइपोल एका को हमें देखि जिबार बुझिला। tan b टा को भी तुम देखि जाई पारो हैला tan a tan b पाखा पाखी सहज अछि। तो tan a tan b एते इंपोर्टेंट नुहे जेति की इंपोर्टेंट एई सब एई जो ऊपर जेति की अछि जेति की इंपोर्टेंट tan a tan b एति की इंपोर्टेंट नुह बुझिला। एति की थिला ए पांचटी थिला हमरो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एबे जिबा हमें पोटेंशियल पाखो। सेकंड यूनिट हला हमरो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो एठी हमें कौन सब जिंस को कवर करिया ना एठिकार फर्स्ट क्वेश्चन हैला ना कैपेसिटर अछि एठी जानि हम इंपोर्टेंट। तो एठी कौन करिया फाइंड द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor। find the capacitance of a parallel plate capacitor। इटी दीटा कंडीशन अछि कहते गले दीटा लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको हमें गुटे कर लिखि दोछि मु with dielectric सेकंड रहला without dielectric हैला with dielectric and without dielectric। 2 नंबर हैला एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर energy
stored in a capacitor जो थे आम लिखुचे U equals to 1/2 CV square है एनर्जी stored in a capacitor. थर्ड है capacitor in series and capacitor in parallel. Fourth, find the electric potential. Find the electric potential at any position due to a dipole. डाइपोल पाई एनी पोजिशन रे पोटेंशियल केते हेबो ताको बाहर करियो बुझियला. तो फर्स्ट कोन रहिला ना कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक. सेकंड हैला विदाउट डाइलेक्ट्रिक. तापर सेकंड क्वेश्चन अछि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जेटा जो थरा हम बाहर करछि U समान हाफ CV स्क्वायर. कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल. 4 नंबर हैला फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ऑफ ड्यू टू ए डाइपोल. एटा हला कहार ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रा. ठीक अछि. एबे जीवा थर्ड यूनिट को इलेक्ट्रिक करंट. देखो ताले इलेक्ट्रिक करंट रा कोन कोन सब इंपोर्टेंस रहउची या पर तुमरो सिलेबस रो स्ट्रक्चर कहि देबी को हिसाब रे को यूनिट रो केतेटा पढियो मध्ये कहि देबी हैला. फर्स्ट आगे लिखि नियो लॉन्ग क्वेश्चन कोन कोन इंपोर्टेंट अछि. देखो एबे जीवा करंट इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी छोड़ो लिखि दो करंट इलेक्ट्रिसिटी बा इलेक्ट्रिक करंट जोटा तुम बुझी पार. एटी फर्स्ट क्वेश्चन हैला फाइंड ड्रिफ्ट velocity of electrons. Find drift velocity and current in terms of drift velocity. Current in terms of drift velocity. एटा हला फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड हैला जेटा कि बहुत थर पचारि कि क्वेश्चन स्टेट किरचॉफ्स लॉ. स्टेट किरचॉफ्स लॉ जो थरे उभय तुम लिखिबो उभय केसीएल मध्ये लिखिबो आउ केवीएल मध्ये लिखिबो. फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस in a Wheatstone bridge using it हैला याको यूज करके बाहर करिया जोटा मने अछि P/Q equals to R/X. X कोन X हैला हमरा अननोन रेजिस्टेंस हैला. एटा थर्ड हैला Joule's law of इलेक्ट्रिकल हीटिंग. Joule's law of electrical heating जोटी आमे लिखुचे बाहर करछे कोन ना H equals to I square RT divided by J हैला. Joule's law of electrical heating. फोर्थ हैला cell in series and cell in parallel. फिफ्थ हैला मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल हैला. जदि काहाकू कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन ने बुझिया पे असुविधा थे मते कमेंट करिवो मु से पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन को आउथरे डेरिवेशन कर देबे बुझियला.
तो फर्स्ट क्वेश्चन एटी कौन थिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए वर्ष पई एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि सेकंड स्टेट किरचॉफ्स लॉ ये तो बहुत थोड़ा आछि 2013 2019 एमती बहुत सारा क्वेश्चन आछि जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो थरे हम H = I²RT/J बाहर करछे तापर अछि सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल और 5 नंबर अछि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट टॉपिक को मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म को एती क्वेश्चन को नोट करो वीडियो पॉज करके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हला मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म रे कोन पडछ आबे ना एठी देखिबा स्टेट बायोट साभार्ट्स लॉ एटा हमर 3 मार्किया पई भी इंपोर्टेंट अछि आउ लॉन्ग क्वेश्चन पई भी इंपोर्टेंट अछि स्टेट बायोट साभार्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन यार फर्स्ट एप्लीकेशन अछि कोन now find the magnetic field at the center of a circular coil eta gote अछि second question अछि using Biot-Savart's law find the magnetic field on the axis of a circular coil इटा थर्ड क्वेश्चन हला मूविंग कोयल गाल्वानोमीटर फोर्थ हला स्टेट एम्पियर्स लॉ and using it to find the magnetic field due to a straight conductor हला स्ट्रेट कंडक्टर पाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर करिया काहा को यूज करके एम्पियर्स लॉ को यूज करके जो उठार केते बाहर B = mu naught I divided by 2 pi r हला ए जो चारटा लॉन्ग क्वेश्चन याको तुमको छाड़ी के जिबार नाही नेक्स्ट जिबा मैग्नेटिज्म एंड मैटर एती लॉन्ग क्वेश्चन को लेखो सयला जिबा मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर रे दीटा लॉन्ग क्वेश्चन अछि जेटा कि तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़ी थिबो 10A 10B जहा एठी मध्ये बिल्कुल सिमिलर सेठी इलेक्ट्रिक डाइपोल पई बाहर करे एठी केवल मैग्नेटिक डाइपोल पई बाहरियो आ किछि जिंसो चेंजेस नै तो बिल्कुल एनालॉगस बा बिल्कुल सिमिलर तो सेटा जतेले भी तुम प्रैक्टिस करथो ए दीटा क्वेश्चन को मध्ये सेही सेम टाइम पे तुम प्रैक्टिस करि पारो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a magnetic dipole
और या को आउ कौन पढ़ा जाए tan a पोजिशन और end on position of the magnetic dipole or end on position है एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है find the magnetic field on perpendicular bisector of a magnetic dipole कौन सी मैग्नेटिक डाइपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पाखरे मैग्नेटिक फील्ड केते हेबो मैग्नेटिक डाइपोल को यूज करके आउ या को कौन कहा जाए tan b पोजीशन बा इक्वेटोरियल लाइन मध्य कहा जाए है ना स्पेसिफिकली कहते गले ए दुटा लॉन्ग क्वेश्चन एते इंपोर्टेंट नुहे जेहेतु तुमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे 10 भी को भल से देखियो तो मोर रिक्वेस्ट रहयो से एका टाइम रे ए दुटा को देखि दवा पे बुझियला अच्छा नेक्स्ट आछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो एथिरे पिला माने गुटे भी लॉन्ग क्वेश्चन नाही आगुरु गोटे पडुथला जोटा के एबे एसी जनरेटर मध्ये से सेम प्रिंसिपल यूज होउची लेखि भी दउची सेटा कोन ना orientation of a coil है ना ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन ऑफ ए कॉइल ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एबे हुए तो एटा एते पडुनी जो जगह हमें बाहर करथिले कोन ना इंस्टैंटेनियस ईएमएफ E0 इक्वल्स टू हम लिखुथिले NIAB है ना साइन हमर E0 रे भेलथिला केते NIAB बा जेटी कहि परिबा हम एटी बाहर करथिले E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t हैला एटा पडुथिला किंतु एते इंपोर्टेंट नुहे ए चैप्टर किंतु तुमे सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखि पारो कोई तो दी जन को नेकी ओडे ओडे करी पांच पकई पारंती सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हला ए दिरा को देखि परले तो 3 मार्क पड़े मे भी जेहेतु एबे 5 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन अछि तो ओढे ओढे करी मध्ये पकई दै पारंती तो ए दिरा को मध्ये भल से देखि दबो हला तापर जिबा अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट रे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि 3-4टा कौन कौन फर्स्ट देखिया से कहू जी फाइंड द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कौन कहू जी ना फाइंड द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ current when an AC source connected in series with inductor and show it on phasor diagram and wave diagram. Phasor diagram and wave diagram. से कहूँ जिते कौन एसी सोर्सटा इंडक्टर सहित सीरीज रे कनेक्टेड होती से केस रे हमको
इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बाहर करियार अछि आ ए जो वेरिएशन रहबो ईएमएफ आउ टाइम भितरे आउ करंट आउ टाइम भितरे ताको हमें वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम आकर एटी सॉल्व बुझियल सेम क्वेश्चन सब जिंस सेम रहबो केवल नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हो इंडक्टर बदले कोन हो जिवो व्हेन एसी सोर्स connected in series with capacitor सहित कनेक्टेड हो सही केस रे कैपेसिटर थर्ड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current for half cycle fourth RMS बा रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ ये दुटा मध्ये देखियो बुझिला एतिकी जिंस देखिबार अछि चारटा क्वेश्चन कोनथरे ना अल्टरनेटिंग करंट रे एलसीआर टाकू एते 3 मार्क पर्पस पई देखि परिबो ए जो सीरीज एलसीआर सर्किट बट 5 मार्क पर्पस पई नो बुझिला नेक्स्ट जिबा ईएम वेव्स तो ईएम वेव्स रो कोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन नाही हला नेक्स्ट चैप्टर होउची कोन ना ईएम वेव्स हां आ गुटे लॉन्ग क्वेश्चन रे छाड़ देई गेली छुआ गुटे लॉन्ग क्वेश्चन छाड़ देली भूली गली with neat circuit diagram write the principal theory of a transformer है 6 नंबर था एसी जनरेटर जेटा कि ऑलरेडी पढ़ी सारी पूर्व वर्ष है एटा एते इंपोर्टेंट नो एसी जनरेटर 2025 रे पढ़ी सारी से ए वर्ष पे इंपोर्टेंट एटा ए दीटा बेसी इंपोर्टेंट देन ए दीटा कम इंपोर्टेंट एते बुझियला ती नेक्स्ट है ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रे कोनोसी भी लॉन्ग क्वेश्चन पचारा जाए नहीं तो ईएम वेव्स लॉन्ग क्वेश्चन पे एते इंपोर्टेंट नो बाकी रहिला जो सेकंड चैप्टर बा सेकंड बुक हमर रहउची तो सेकंड बुक रहउची ऑप्टिक्स रहउची एटॉमिक फिजिक्स रहउची न्यूक्लियर फिजिक्स रहउची डुअल रहउची सेमीकंडक्टर रहउची तो तार जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु नेक्स्ट पार्ट वीडियो रे नै केला जदी मोर ये वीडियो तुमको इंफॉर्मेटिव लागुथो भल लागुथो तो सांग मान को सहित शेयर करो बाकी कोनोसी भी लॉन्ग क्वेश्चन मध्यरु जदी तुमको कोनोसटा भी असुविधा थिबो मते कमेंट सेक्शन में जणा मु से पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन रो डेरिवेशन तुमको भल भाबरे बुझाई दे धन्यवाद।